Yes, you're able to see the screen, right? Yes, ma'am. Presentation. Okay. So anybody will tell me what did we discuss yesterday? Any one of y'all? Yes, in business systems and procedures. About the diagram, swim lane diagrams and Yes. purpose and benefits. So we dealt about, initially we had dealt with flowcharts. We had dealt with the different shapes that we use in preparation of flowcharts. And apart from flowcharts, we yesterday looked into swim lane diagrams, wherein it not only depicts the sequence of the activities that is required to be carried out, the decisions that are involved therein with a different type of what we say the diamond shape that we use, but also we looked into that we could look into the different departments that are involved in the entire process. They were depicted in the swim lane diagram. The interconnectivity or the interdependence amongst the different departments and levels probably that could be seen in the diagram. In the next diagram, wherein it was with respect to swim lane diagram for deciding on the capital investment, we also looked into that towards the horizontal axis, we can even have the duration that could be mentioned. Then the actors, that is the personnel, those who are acting on that particular activity or task, they could be highlighted over there, and number of things like what are the do's and don'ts of swim lane diagrams. Probably we looked into the next session, wherein uh, he insisted that where the duration is more and where one of with 71 days and there was one single box that was depicting the duration, that's not the correct way of preparing the swim lane diagram, because with respect to each and every detail of the main activity has to be depicted therein. Only then, so that's a major case where the swim lane diagrams could go wrong, or it won't be an exact pictorial presentation of the entire process that is looked into in any of the organization. Yes. So probably some of the participant needs to mute the videos. Who is that? So now today we yes, today we move ahead uh, with unit 2, that is with respect to the study of systems, wherein we do the mapping of processes and then writing of SOPs for an entire range of activities for a typical business process in a manufacturing or service organization. That's what is indicated in the syllabus. So now for mapping of processes in a manufacturing organization, we would be looking into a dairy organization, right? Now, everybody is probably aware that how a dairy organization works. So if no, then we will be looking into a small video, because that's where they have mentioned that you have to visit that organization and look into the details of the operations. Now, visiting the organization is not possible in today's pandemic, but then at least I can give you all an overview of how things are worked out. And this, I had my PhD thesis is entirely on the dairy industry, wherein I have looked into the process mapping of the different activities, or rather call it as major processes, and then the activities that are involved in the manufacturing of n number of products, right? So how does a dairy organization work? So let us look into that first, and then we actually look into the video of milk processing, right? So the milk producers that are there in the villages, they join the dairy cooperative society.
Now, these milk producers, they are not essentially involved only in the business of producing milk. Actually, they are the agricultural farmers, right? Whatever animals they are having with respect to the farming, so they receive the raw milk from these animals. After taking care of the family requirements of milk, then the excess milk that remains with them is what they sell to a cooperative dairy. So wherein the dairy requires these farmers to become the members of the cooperative society for selling the milk on a regular basis, right? Now these members, they agree to sell their milk only to the society, and they in turn buy the shares of the society, right, to get the membership. Now the society's milk collection center, it accumulates the daily milk. Now this accumulation of the milk takes place twice a day, that is in the morning and in the evening. They look into the quality of the milk, and then they make the payment to the milk producer, that is the farmer, based on the fat and SNF, that is the solid non-fat content of the milk. Now what happens at the end of the year? The profit that is generated by the society is shared with its members. Now development programs, including productivity enhancement program for the members, they are conducted through these cooperative societies with the help of district and state level respective institutions. Now, so a district cooperative milk producers union is maintained by a dairy cooperative society in that particular district. So village cooperative societies, they sell to the entire district union. Now the district union, it then processes the raw milk, produces the different or a variety of milk products. Now it is also responsible for marketing of these products, and the union in turn, they provide services to the village cooperative societies and their members in different uh, areas with respect consulting areas, rather we can say, with respect to the feed that should be given to the animals, the veterinary care that is expected to be looked into, the artificial insemination, and the administrative support that is required to run the cooperative business. So this is how the cooperative dairies work with their members who are nonetheless in the farmers. Now this helps overall the village economy to grow, as well as the agricultural farmers, they get a regular source of income uh, that comes in on a regular basis, that supports them with respect to because the agricultural produce will be sold say twice or thrice a year, and that's what generates cash flows for them. So this helps them in receiving their cash flows on a regular basis. At the same time, these cooperatives also look into or take care of the women empowerment part, where the women in the villages, they look into the actual rearing of animals, and then looking into or recording the produce of milk to the cooperative society, and that's how the entire villages are developed, and that helps the dairy sector has contributed a lot. It is almost contributing towards 4 to 5% of the GDP of the agricultural income, and that's how it helps in the overall growth of the economy. So now with this background, now let us actually look into how a dairy works, or what are the different processes that are involved. Now the video that I have selected is in Hindi,
because that's where I could find that maximum of the processes are involved, wherein the videos in English, they were with respect to a singular process, and with the greater technicalities of the processes themselves. So we need not look into the technicalities here. We are concerned with what are the different processes that are involved, then what could be the different activities that could take place with respect to each of the processes, and how do we build in the standard operating procedures with respect to each of these activities. So that's the reason I looked into this video that was in Hindi. वेलकम टू एजुकेमेस्ट्री। आपने टीवी पर दूध के बहुत सारे एड तो देखे ही होंगे, या मार्केट में दूध के पैकेट को देखा होगा, या इन दूध के पैकेट को खरीदा होगा। क्या आपको पता है इन दूध की पैकिंग किस प्रकार से होती है, और पैकिंग से पहले दूध को किन किन प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है? तो आइए इसको जानते हैं। दूध को मार्केट में भेजने Okay, are you able to view this? Yes, ma'am. Okay. से पहले दूध की बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसे दूध प्रसंस्करण या फिर दूध संसाधन कहते हैं। इसके अंदर दूध की गुणवत्ता की जांच होती है। मिल्क प्रोसेसिंग या दूध प्रसंस्करण क्या है, इसको पढ़ते हैं। कच्चा दूध जो डेयरी पर प्राप्त किया जाता है, उसका गुणवत्ता परीक्षण करते हैं। यदि गुणवत्ता परीक्षण सकारात्मक है, यानी उसकी फैट, उसमें प्रोटीन, उसमें अम्लता, ये सारी चीजें अगर सही है, तो फिर बाद में दूध का प्रसंस्करण किया जाता है, पास्तुरीकरण किया जाता है, निर्जमीकरण किया जाता है, समांगीकरण किया जाता है, और इन प्रकार की क्रिया होने के बाद में इनको टैंकों में भरकर वितरण के लिए भेजा जाता है। यानी अगर गुणवत्ता में वो सकारात्मक है दूध, तो उसको कूलिंग ऑफ मिल्क या पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन या होमोजेनाइजेशन की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं करने के बाद में इनको टैंकों में भरकर बेचने के लिए भेजा जाता है। दूध संसाधन या दूध प्रसंस्करण में जो क्रियाएं काम आती है, वो 4 क्रियाएं आती है, और इन आज 4 क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहला है कूलिंग ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और होमोजेनाइजेशन। इन चारों क्रियाओं के बाद ही दूध को डेयरी में से पैकिंग करके भेजा जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध ठंडा करना। दूध ठंडा करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर तापमान अधिक होता है तो दूध में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और दूध जल्दी खराब हो जाता है। लंबे समय तक चलाने के लिए दूध को ठंडा करना अति आवश्यक है। तो पहला प्रसाधन या इसकी प्रोसेसिंग है, वो होती है कूलिंग ऑफ मिल्क या दूध ठंडा करना। दूध उत्पादन के तुरंत बाद दूध को ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जीवाणु की संख्या बढ़ती नहीं है और दूध शहरों तक पहुंचने तक खराब भी नहीं होता है। क्योंकि तापमान अधिक होने से दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है और दूध जल्दी ही खराब हो जाता है। क्योंकि अधिकतर जो जीवाणु होते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक वृद्धि करते हैं। इसलिए दूध को 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं, ताकि जीवाणु इसमें वृद्धि ना कर पाए। अब जो दूध होता है, उसको ठंडा करने की 2 विधि है। पहली विधि तो इसके अंदर है देसी विधि या इंडिजिनियस मेथड। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, जो दूध लेने वाला या देने वाला होता है, वो क्या करता है, दूध की एक टंकी रखता है और उसके चारों तरफ एक गीला कपड़ा रखता है, ताकि दूध ठंडा रहे। दूधिया का मतलब होता है दूध जो गांव से लेता है। गांव से दूध इकट्ठा करते समय
इस शर्त पर उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वे बर्तन के चारों ओर कपड़ा लगाकर उसे पानी से तर रखें, जिसके वाष्पीकरण से अंदर का दूध हमेशा ठंडा रहे। ये तो होगी देसी विधि ठंडा करने की, कि वो क्या करता है, दूध के बर्तन के चारों तरफ एक कपड़ा लपेटे रखता है, जिससे दूध ठंडा रहता है। ये देसी विधि है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि भी है, इसको भी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के शीतक काम आते हैं जो दूध को ठंडा करते हैं। कौन कौन से शीतक है, जैसे तल शीतक, कैबिनेट शीतक, प्लेट टाइप शीतक, धुरी ट्यूब वाले शीतक। ये क्या करते हैं, एक प्रकार के बर्तन होते हैं, इसके अंदर दूध ठंडा रहता है। और इन शीतकों में दूध को ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर इन शीतकों में या इन बर्तनों में ठंडा पानी डाला जाता है तो क्या होता है, इसमें पास्चुराइज्ड दूध को 10 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको ठंडा कर सकते हैं। ये कब है, ठंडा पानी डाला जाता है अगर इन शीतकों के अंदर। दूसरा है अमोनिया। अगर इन शीतकों के अंदर अमोनिया डाला जाता है तो दूध को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको ठंडा कर सकते हैं। अगला है ब्राइन विलियन। इन शीतकों में ब्राइन विलियन डाला जाता है। ब्राइन विलियन क्या है, बर्फ और नमक का मिश्रण होता है। इनको शीतकों में डाला जाता है तो दूध लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। यह है साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि दूध को ठंडा करने की। दूध को ठंडा करने के बाद में अगली जो प्रसाधन या प्रोसेसिंग आती है वो होती है पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध का पास्तुरीकरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अत्यधिक जो डेयरी होती है उसके अंदर मिल्क का पास्चुराइजेशन किया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक चले और खराब ना हो, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब दूध ले जाया जाता है तो बीच में खराब ना हो। पास्चुराइजेशन क्या है और किस प्रकार से दूध को प्रोसेसिंग में लाया जाता है, इसको पढ़ते हैं। पास्चुराइजेशन के अंदर एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग डेयरी के अंदर अलग अलग साइज की होती है, छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। लगभग इसकी लागत जो होती है वो 3 लाख से लेकर 8 या 10 लाख तक होती है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क या दूध का पास्तुरीकरण विधि का नाम होता है, वो फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर के नाम से लिया गया है। जो लुईस पास्चर है उसके नाम से इस विधि का नाम दिया गया है। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें ये इस परिभाषा के अंदर कहता है कि वह क्रिया जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व तथा क्रीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसको इस तरीके से गर्म किया जाता है ताकि इस दूध उफान न आए, या फिर दूध के अंदर जो वसा होती है या जो हम बोलते हैं क्रीम होती है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। दूध की पास्तुरीकरण के अंदर 3 प्रक्रियाएं होती है और इन 3 प्रक्रियाओं के कारण ही दूध लंबे समय तक चलता है। इसमें पहली प्रक्रिया होती है दूध को गर्म करना, दूसरा है होल्डिंग या धारण करना, और तीसरा होता है ठंडा करना। दूध को लगभग 63 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि निश्चित तापक्रम, या तो दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा या फिर इसको 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। इसके बाद होल्डिंग का मतलब होता है जो 63 या 72 डिग्री सेल्सियस था इसको निश्चित समय तक उसी तापमान पर रखना, यानी होल्ड रखना। 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट के लिए इसको रखा जाता है। अगर हम इसको 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो इसको होल्डिंग टाइम इसका कितना होता है, 15 सेकंड होता है। होल्डिंग टाइम इसका 15 सेकंड होता है। अगला है ठंडा करना। दूध को गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि इससे बचे हुए जीवाणु भी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। यानी हम जो पास्चुराइजेशन की जो विधियां पढ़ेंगे आगे दो, उन विधियों के अंदर ये 3 प्रक्रिया ही काम आएगी, गर्म करना, होल्डिंग करना और ठंडा करना। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा ही हम इनकी विधियों को पढ़ेंगे। तो जो पास्चुरीकरण है उसकी लगभग 2 विधियां होती है। पहली जो विधि होती है वो होती है कम ताप अधिक समय विधि, जिसको बोलते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, या फिर इसका शॉर्ट नाम है वो होता है
अल्टी। अल्टी का मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस विधि में क्या होता है, एक दोहरी कुंड वाले विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन के अंदर ही दूध को डाला जाता है। इसके अंदर दूध ठंडा होता है, होल्डिंग होता है और ठंडा भी होता है। इस विधि को पढ़ते हैं। इस विधि को धारण या बेंच पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। धारण मतलब होल्डिंग। इस विधि के अंदर दूध को लगभग काफी समय के लिए धारण किया जाता है या रखा जाता है, इसलिए इसको धारण या बेंच पाश्चुरीकरण भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अल्टी अल्टी के अंदर दूध को कितनी देर के लिए रखा जाता है, तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। कौन सी विधि में? अल्टी अल्टी विधि में रखा जाता है। गर्म करने के बाद इसको तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। यह विधि दोहरे दीवार वाले कुंड में पूरी की जाती है। दोहरी दीवार वाले कुंड का मतलब समझ रहे होंगे आप कि डबल लेयर जिसके अंदर होती है, 2 लेयर वाला कुंड या 2 लेयर वाला यंत्र। 2 दीवारों के बीच में जो रिक्त या खाली स्थान होता है उसको जैकेट कहते हैं। और दूध को गर्म करने के लिए जैकेट में गर्म पानी भर देते हैं। अगर जैकेट में गर्म पानी भर देते हैं तो दूध गर्म हो जाता है। यदि दूध को ठंडा करना है तो उस जैकेट में हम ठंडा पानी भर देते हैं। इसमें कुंड की दीवारें स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कुंड के अंदर एजिटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एजिटेटर लगा होता है, जो दूध को हिलाकर दूध को समान रूप से गर्म करता है। आपने मिक्सी के अंदर देखा होगा कुछ ब्लेंडर जैसा होता है जो उस चीज को घुमाता है। उसी तरीके से इसके अंदर एजिटेटर लगा होता है जो दूध को समान रूप से हिलाता रहता है, ताकि इसके अंदर वसा या इसके अंदर क्रीम अलग ना हो। इसमें तापन, धारण और ठंडा करना, ये तीनों प्रोसेसिंग इसी के अंदर ही होती है। किसके अंदर? अल्टी अल्टी के अंदर। और अल्टी अल्टी के बाद में हम बात करते हैं दूसरा अचटी अष्टी। अचटी अष्टी क्या है? यह है उच्च ताप अल्प समय विधि। ये दूसरी विधि है पास्चुराइजेशन की, उच्च ताप अल्प समय विधि यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसको शॉर्ट में अचटी अष्टी भी कहते हैं। इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। और इस प्रकार की जो मशीन होती है अलग अलग डेयरी के अंदर छोटी या बड़ी हो सकती है। इस विधि का दूसरा नाम सतत पाश्चुरीकरण भी है, क्योंकि इस विधि में दूध लगातार बहता रहता है। इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, एचटीएसटी के अंदर दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड गर्म करते हैं, लेकिन हमने अल्टी के अंदर पढ़ा था कि 63 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उसको 30 मिनट तक गर्म करते हैं। लेकिन अष्टी अष्टी के अंदर 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगातार दूध बहता रहता है। जल्दी जल्दी इसके अंदर पाश्चुरीकरण होता है और तुरंत बाद इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा भी कर लिया जाता है। जो पाश्चुरीकरण है एसटी के अंदर, इसके अंदर टोटल 6 भाग होते हैं। पहला तो है रीजनरेटिव सेक्शन, या इसको पुनर्जनन विभाग भी कहते हैं। फ्लोट कंट्रोल टैंक। अगला है हीटिंग सेक्शन यानी गर्म करने वाला भाग। होल्डिंग ट्यूब, धारण नली, फ्लो डिवर्सन वाल्व। और अगला है कूलिंग सेक्शन। ये 6 प्रकार के पाश्चुरीकरण के अंदर भाग होते हैं। और इसकी विधि पढ़ते हैं कि किस प्रकार से एसटी के अंदर दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है। सबसे पहले कच्चा दूध दूध संग्रहण कक्ष से मशीन के पुनर्जनन भाग में आता है। दूध के बहाव को समान रखने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व काम आता है। पुनर्जनन भाग में 2 ट्यूब एक दूसरे के अंदर लगी होती है। दोनों ट्यूब के बीच में जो खाली स्थान होता है उसके अंदर कच्चा दूध पाया जाए। इसके अंदर क्या होता है, डबल लेयर वाली एक नली होती है, उस नली के अंदर कच्चा दूध बहता रहता है और वो हीटिंग सेक्शन में दूध गर्म हो जाता है। हीटिंग सेक्शन एक अलग प्रकार का नली है, उसके अंदर क्या होता है, दूध गर्म होता रहता है और इसके बाद दूध तापकों से निकलकर ठंडा होने के लिए
कूलिंग सेक्शन या शीतकों में चला जाता है। जो हीटिंग सेक्शन में होता है दूध लगभग 15 सेकंड के लिए रहता है, 15 सेकंड में जल्दी से गर्म हो जाता है और तुरंत दूध चलता चलता कूलिंग सेक्शन में आ जाता है, वहां पर दूध जल्दी ही ठंडा हो जाता है। वहां से ठंडा होने के बाद में शहरों के लिए भेज दिया जाता है, यानी बेचने के लिए या फिर इसको पैकिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। अब ST के अंदर दूध पाश्चुरण करने का लाभ क्या होता है? देखो, इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसका पहला जो लाभ है वो है अधिक दूध के लिए ये उत्तम है, यानी दूध अगर ज्यादा है, डेयरी बड़ी है, तो ये इसके अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर समय कम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 15 सेकंड तक ही इसके अंदर रुकता है दूध, और अल्टी के अंदर 30 मिनट का समय लगता है। इसमें संपूर्ण क्रियाएं एक ही मशीन में हो जाती है। संपूर्ण क्रियाएं का मतलब कौन कौन सा हो गया? गर्म करना, होल्डिंग और ठंडा करना। श्रम व व्यय कम लगता है, मेहनत कम लगती है इसमें। कम जगह की आवश्यकता होती है, हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और बड़े दूध व्यवसाय के लिए ये उपयोगी होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन। इससे पहला कौन सा था? पास्चुराइजेशन, जिसके अंदर हमने अल्टी और ST पढ़ा है, और अब पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण। व्यापारिक रूप से निर्जमीकरण का तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फारेनहाइट से 211 डिग्री फारेनहाइट तक लगभग इस तापमान पर हम इसको 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी यह विधि पहले वाली विधि के समान है, लेकिन बस इसके अंदर अंतर इतना ही है कि इसको 200 से 211 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। 200 डिग्री फारेनहाइट का मतलब होता है लगभग इसमें 94 डिग्री सेल्सियस, और 211 डिग्री फारेनहाइट का मतलब होता है 98 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इस तापमान पर इसको गर्म किया जाता है ताकि जीवाणु सारे इसके अंदर नष्ट हो जाए, और इसके बाद दूध को ठंडा करके दूध को लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। विधि की बात करें तो सबसे पहले दूध को छान कर 100 से 120 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर हम गर्म करते हैं। इसके बाद दूध को समरूप तरल बनाने के लिए, यानी एक सा बनाने के लिए 150 से 160 डिग्री फारेनहाइट तापमान पर फिर से गर्म करके समांगीकरण यंत्र से 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दाब डाला जाता है। इसमें क्रीम लेयर के रूप में दूध के ऊपर प्रकट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, समांगीकरण यंत्र से हम इस पर दाब डालेंगे तो क्रीम की लेयर नहीं बनेगी, या इसके अंदर परत नहीं बनेगी, अलग से किसी भी प्रकार की परत या वसा अलग नहीं होती है इसके अंदर। इसके बाद इन्हें बोतलों में भरकर 212 से 230 फारेनहाइट तापमान के पानी से भरे टैंक में डाला जाता है। इनको बोतलों में भरने के बाद क्या किया जाता है, बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं, उसके अंदर गर्म पानी होता है 212 से 230 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर टैंक में डाला जाता है। और टैंक में डालने के बाद में क्या करते हैं, इनको ठंडा करके शहरों में भेज दिया जाता है। तो एक निर्जमीकरण भी एक प्रकार का मिल्क प्रोसेसिंग है, जिसके द्वारा दूध खराब नहीं होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे समांगीकरण या होमोजेनाइजेशन। यह भी एक प्रकार की दूध प्रोसेसिंग या दूध प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है, यांत्रिक विधि द्वारा दूध की वसा गोलिकाओं को एक समान आकार वाले छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे दूध संग्रहण करते समय क्रीम या लेयर के रूप में एकत्रित न हो और सारे अवयव दूध में समान रूप से उपस्थित हो। इस क्रिया में समांगीकरण यंत्र द्वारा अधिक दबाव पर दूध को संचालित करके पूरा किया जाता है। इसमें भी एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। इसमें क्या होता है, दूध को गर्म करने के बाद में इसके अंदर उस यंत्र द्वारा दाब डाला जाता है, जिस दाब के द्वारा पूरा जो दूध होता है वो एक समान से घुल जाता है और क्रीम या इसके अंदर वसा अलग नहीं होती है। और इस प्रकार से दूध को हम लंबे समय तक चला सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध को किस प्रकार से लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। इसी तरह के दूध से संबंधित अन्य जानकारी देखने के लिए लगातार Okay, so that's where we have looked into how the processing of milk takes place. Now, this entire processing of milk, if we look into the major processes that are involved with respect to manufacturing of milk, they are as follows that have been divided. First is milk procurement, wherein you actually procure the milk from the cooperative. Then is milk reception,
milk reception, that's where after procuring the milk from the different uh, village cooperatives, that's where it is received at the reception desk of the dairies. Then you will be storing the milk, and the milk is brought to some standard form along with the storage. So that is storage and standardization. Then we have pasteurization, homogenization. We have looked into both these processes. Then after homogenization, we store the milk again, we pack it, and then we dispatch it. So these are the major processes that are mapped with respect to the manufacturing of pouch packed milk. So now let us look into the further activities that are involved in these major processes. So it was identified that some 21 activities were involved till we actually from the procurement of raw milk till the actual pouch packed milk. That's what we receive from the dairies or from the shopkeeper from whom we purchase it, right? So let us look into these activities. So first is collection of milk, raw milk from the collection centers. So now here the milk is collected from the district cooperative societies into cans. Now these cans mainly or on a majority basis, they belong to the dairies that go in for collection of the milk. Then the second process is after bringing the cans, after collecting the milk in the cans, then the cans, they are transported to the dairy where these cans are unloaded. So unloading of cans of raw milk. Now these cans are usually unloaded by daily wage workers that are employed by the dairy and the laborer carrying the cans in the tempo. Now, this tempo is not owned by the dairy. They make the payment to the tempo holders every 15 days for carrying or procuring the milk from various destinations via the different routes. Now, these routes again are planned by the dairy organization, right? Then this payment is also termed as this comes under the procurement costs. Then record is maintained route wise for analysis purpose to find out the procurement cost per liter. So this is with respect to unloading of cans. Then the milk is graded. By grading, we mean that the procured milk or the raw milk, it is checked by the laborers for sourness, right? Now it is if it is found to be sour by human sniffing process, then this milk is treated separately. So yes, you just bring it closer to your nose and you sniff it and you see whether it sniffs sour or is it a normal process, normal appearing milk or smelling milk, you can say. Then fourth is weighing, sampling and transfer of milk sample to the lab. Now the standard operating procedure has been developed with respect to this activity in the entire you can say activities of milk. And now this is prepared in the Excel sheet. It is as follows. So now this is with respect to development of standard operating procedure. So first, the milk is received in cans, that is, which is being weighed. Second, the entry is made against the supplier that is bringing the can with respect to the date, the timing, the quantity, the supplier code, etc. That is, there are separate cards or many times the documentation that is being maintained by the dairies when they receive the milk. Okay, now these cards are further utilized by the dairies in order to make the payment to the suppliers. Then a sample is drawn from each one of the can by the lab assistant. The test is applied to verify the SNF and fat percentage of milk as discussed in the video. Then a report is generated and immediately it is intimated to the milk reception department, right? Now, if the report, as per the details of the report, if it is found within the acceptable range, then the department enters the payment rate that is to be given for the milk received. Now, depending upon the fat and SNF percentage, the rate and the quality of milk, the rate varies accordingly. If it is not found in the acceptable range, then it is returned to the supplier. Now, the acceptable milk that is received in the cans from different sources then goes in for the next process or the next step, that is for
filtration. So this is the standard operating procedure for just one of the activity, that is weighing, sampling, and transfer of milk sample to the lab. That's what we looked into over here. Fourth step or fourth activity, you can call it. Okay. So after this SOP, we now move into the fifth activity, that is filtration, where the received milk, which is in an acceptable range as per the quality norms, that is after the tests are being applied. So this milk is then filtered and then it is stored. Then an online storage in dump tank, that is the milk received and filtered is stored in the tank. Then again there is an online filtration process that take place. The milk is then is stored in the tank over here, is then filtered again, and then it is chilled at 5 degrees Celsius or below that, okay, to prevent the microorganism growth, as we have seen in the video. So this is with respect to, yes, it is chilled and then stored in raw milk tanks. The chilled milk is then stored in the tanks before it moves on to the next operation. All right. So now where the operation is in the form of a continuous process wherein the milk will be flowing through the pipes, okay, and it will be undergoing all the processes that we have seen in the video or that we will be looking into our operations now or activities now. Okay, so first is standardization. Now this process of standardization is carried out to bring the entire milk that is available in some standard form. Now the standard form, it refers to the combination of fat percentage and SNF, that is solid non-fat percentage, that is required for manufacturing the different products from the pasteurized milk and meeting the legal prescribed standards for the market milk varieties, right? So the milk that is procured from the different sources, it is brought to a standard form. Now, how will it be brought to a standard form? In case the fat percentage is less, then probably the cream will be added to the milk to make it to an acceptable level, and so on. Then we have the next process, that is pasteurization. Now, this process is carried out to increase the shelf life of the milk. So we have looked into the video where in the pasteurization process, the milk is heated, it is folded, and then it is cooled down, right? Now, this process, it helps in maintaining the quality of milk by removing the microorganisms and the enzymes that are present in the milk. So that's why, as well as the required bacteria, the healthy bacteria is maintained. So that increases the shelf life of the milk. After pasteurization, we have homogenization. Now, homogenization, it helps in breaking of the fat globules, that is resulting into an equal distribution of fat. Now, this process will prevent the formation of the layer of cream over the milk. As we see in our houses also, when we boil the milk, after it cools down, we have a cream layer on the top of it. Now, with the homogenization process, these cream layer or these fat globules, they are continuously broken down, and that's where there is no accumulation of a separate cream layer, and the entire milk, it's of the same cream whenever you received it in a liquid form. Okay, then 13 is transfer of milk from the silo to the storage tank. Now this is where after the standardization, the milk, now the silo is nothing but where the actual the homogenization process that takes place, it's in a silo, right, or a bigger tank you can say, and then it moves into a storage tank. So after standardization, the milk is moved to silos, that is large capacity vertical milk tanks that are used for chilling and storing the milk. Now the milk is then transferred to smaller storage tank that is located near the packing department. So that's with respect to storage of milk and cooling it down after the standardization, pasteurization and homogenization process. Then again, when all these processes are carried out,
Sampling takes place once again, where the samples are drawn and they are tested for the desired quality. Once again, online filtration takes place. Now this process, it again helps in sorting out the suspended particles in the range of say 0.05 to 10 microns. This helps to eradicate almost 99% of pore forming bacteria. Okay, again to maintain the shelf life of milk. Then we look into pouch packing. Here the machines are used to fill in the milk of desired quantity. Crate receiving and cleaning. So once the milk is poured into the desired quantity packages, then the crates are received and then they are cleaned. The crates that carry the milk pouches are cleaned and received for collection of pouch packed milk of different quantities. Next, activity number 18 is crate filling. That is, crates are filled up as and how the filled pouches are filled and they are sealed from the machines. It's very again interesting to know how the pouch packing takes place with the help of the machines. All right. Now, through the pipes, the machine flows into the desired quantity bags that are supplied from again through the machines, wherein the polythene sheets they run into the machine where that pours the milk into it. Then they are sealed and then they are dispatched one by one at the output section. Now, then again an online sampling takes place where the samples are picked up for every pouch packed batch for again quality confirmation, whether the pouches are of the milk is of a required quality, again the pouches are sealed properly and so on. Then the pouches, once they are filled, they are again they go for in cold storage section. It is required for maintaining the quality of milk, so they get stored in the cold storage section after filling and sampling. And then we are having the loading and dispatch, where the crates of pouch pack milk are further loaded in the vehicle of desired capacities, and then they are transported to the distributors, franchisors, or departmental stores. So now these are the different activities that are involved in the manufacturing of milk, wherein the standard operating procedure for each of these activities could be built in a similar manner as the SOP was built in for weighing, sampling, and transfer of milk sample to lab. Now, building of these standard procedures will help an worker, okay, the person who is performing the task, to know what is expected from him. Okay, so and yesterday we had studied the swim lane diagrams, wherein we can identify the different departments that are taking care of this, right? And now if we look into this standard operating procedure and we try to develop a swim lane diagram for the same, then the different departments that could be included could be the milk reception section, it could be the payment section, okay, then there is the laboratory section where the testing takes on. So three departments will be involved in the actual activity with respect to weighing, sampling, and transfer of milk sample to lab. Fine. Yes, so with this probably we are done into the process mapping. So in total there are 21 processes we can say, or activities that are involved in the processing of milk, and this is the standard operating procedure that is developed with respect to one of the activity or one of the processes. Yes, so now after looking into the standard operating procedure for one of the processes of a manufacturing organization, now with respect to service organization, we have initially seen the registration process swim lane diagram and the entire registration process in one of the examples in the previous session, session number 4, I suppose. And now let us look into, say, for example, if anybody asks you to prepare and standard operating procedure for issue of I-cards to the students who have taken admissions, okay, so what could be the standard operating procedures for the same?
So that's where we look into, wherein step number 1 is checking whether the admission process with respect to the loading of documents and form filling on a requisite website is complete. So first is taking admission process, that is step number 1. Then filing of the original documents with the respective college. Then payment of the minimum fees for the admission process, check whether they are paid. And again, if the balance, if any, that the student will be paying in form of installments, it is agreed to be paid with the permission of the requisite authority, usually the director or head of the department. Then the photocopies are received by the students, from the students. The division and roll numbers are allotted to them. Again, all the details of the students are verified by the student themselves in the records maintained. So this is with respect to removing the grammatical errors, if any, spelling mistakes, and so on. And then after the entire process is, admission process is done, the documents are received, the fees are received, the roll numbers are allotted, and verification by student has taken place, then one of them within the organization, he can contact the vendors for receiving the quotation for supply of iCards to the students, then finalize the quotation amongst those received, and then with respectively the vendor, identify or decide on the payment terms, and after giving the specification of the type of iCards that is being required, then once it has been decided, the iCard that will be issued, a sample will be issued to the organization with respect to the specification provided. If the sample is found to be okay, then we can place the order. If no changes are to be suggested, then again, once again, the sample will be issued, and so on. Then actual receipt of the iCards from the vendor. A student list is prepared for the actual receipt of the iCards by the students along with their date and sign, the date on which they have received, and putting their signature indicating that they have actually received their iCards. Then verifying that the iCards are received as per the orders made and details provided. So where each and every student will look into the details provided, and once everything is found to be okay, the final payment is made to the vendor. Right. So again, so this is the standard operating procedure. We can have a flow chart or a diagram that could be drawn with respect to this SOP, so that nobody actually looks into the reading of the standard operating procedures, but the pictorial diagram will make it easy to get a bird's eye view of what is expected of following the standard procedure, and accordingly the procedure can be carried out with whoever person who is responsible to look into this matter. Right now, again, if we decide to have a swim lane diagram with respect to the standard operating procedures, we can see that the admin department we could be having taking care of the things. Then again, there are the faculty members, or we can say the coordinators, who are responsible to receive the requisite documents from the students. Okay. Then again, the department, admin department, the person who is responsible to look into the vendors. Then the account department that will make the final payment, and again, the respective college HOD who looks into the task, that the entire process of, he himself won't be looking, but through his faculty members or student coordinating team, they will be taking care of to see to it that they are recorded on it, and the iCards are issued on a timely basis. So now the reason that I have picked up this example was because you must have already gone through this process of admission and receipt of iCards from the college, right? So this is a standard operating procedure. Now, with respect to, so once the procedures are identified, the process, the steps, the sequence is identified, then one can go into preparation of the flow charts or the swim lane diagrams. Now, again, with this, let us move into
The diagram, yes, it was prepared by me for with respect to, yes, processing of milk, because we have looked into the 21 steps that are required. Yes, can you look into the flow chart? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can see. Okay. So that's where we have the flow chart. Now this flow chart is not as per the shapes that are given to you, because this was not with respect to the business systems and procedures that was prepared. Okay, so this is where the raw milk is received, then unloading of cans take place, the milk is graded. Okay, in case the milk is found to be sour, then it, but still it is, if it is in an acceptable range, then it goes into the sour milk storage where the payment policy has been decided. Now this sour milk storage, it usually goes into the preparation of curd, right? Then if it is not found, then if it is very abnormal smell, then it is usually drained off, because there is no point in keeping that milk. Then again, weighing, sampling and transfer of milk to sample lab, filtration takes place. Then again, online storage in dump tank after the milk is filtered. Then online filtration once again, chilling at 5 degrees or below. Then storage in raw milk tanks, of raw milk in the tanks. Then we have the standardization, pasteurization process that is being carried out, and the homogenization that is being done, and then the transfer of milk from the silos to the storage tank, wherein again the sample is taken, again it is filtered, then pouch packing take place. In case of pouch packing, again if the leaky pouches are found, then they are separated, and that milk goes into the standardization again. Okay, then crate filling. Okay, before filling the crates are received and cleans first. Then again online sampling of one of the pouches from each of the crates will be done to check the quality requirements. Then again the pouch pack milk are then stored in cold storage, and then they go in for loading or dispatch. Now in case the milk is found in short supply with respect to the entire capacity of these capacities of the pasteurization standardization process, these are balanced, so that we do not use them at below capacities. But usually what happens is there are two seasons, that is flush season and lean season. Now flush season is usually the winter season, wherein the production of milk is good, it's on a higher side. Whereas during the lean season, whenever the milk is received in low quantities, in order to match up with the capacities of these machinery, what takes place is the skimmed milk powder that is produced wherever the milk is in excess supply. Milk powder is produced and it is stored. Now usually the shelf life of skimmed milk powder is for 1 year, right? So whenever the milk is in short supply, this skimmed milk powder and chilled water, they are mixed together, they are blended, and then the raw chilled milk, it again goes into the standardization process, so that the quantity of milk is matched to the demand of milk. Now again, over here we can see some arrows in the pasteurization section, that where in the pasteurization section, if there is excess of cream in the milk, then what happens, this cream is separated and it is stored separately in a storage tank. Now this again goes for producing the different milk products. So this is the flow chart with respect to the different activities that are involved in manufacturing of milk. Okay, so now, after this flow chart, we can look into again the different departments, and then we can have a swim lane diagram for the same. So that's with respect to our unit 2. And yes, it's with respect to the process mapping and writing of SOPs for a range of activities for a typical business process in a manufacturing organization and in a service organization.
Now with this, in next session, we will be moving on to unit 3, wherein we need to look into the standard operating procedures for at least five of the processes that are involved in the syllabus. So let's see, we will pick up the processes. We will be discussing the sub processes or subtasks or activities, you call it, within the processes, and then therefrom your assignment would be to prepare the flow charts, to prepare the swim lane diagrams, okay, and even detailing out the activities with respect to the major processes. As we had seen over here, we had identified 8 major processes, okay, and then with respect to each of these processes we were having these different 21 activities that were involved in the 8 processes. So the detailing of the activities, so let's see how we move ahead. So next 5 sessions would be with respect to process mapping, building of standard operating procedures, then creation of flow charts and creation of swim lane diagrams, right? So that's where the assignments would be given to the students. We are dropping out on the activity with respect to the state level SIP competition that we have discussed, right? And we will move on to the standard operating procedures of the at least 5 types that are mentioned in the syllabus. Okay, yes, so that's where we stop over here for today, and see you all tomorrow with one of the processes. Yes, thank you. Thank you, ma'am.